बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत व ईमान के बेहतरीन हालात में होंगे। I, Faiza Waseem, will be the host for the day. On behalf of GIO Telangana, I warmly welcome you all, especially the young intellectuals, career changers, and our guest speaker, Sister Sidra Maheen, to the Career Guidance Program, Part 3. As we embark on this journey of exploring various career paths and opportunities, our program aims to help you make informed decisions about your future and discover the exciting possibilities that lie ahead. Before we begin, Jazakallah khairan kaseera to each and every one of you for being here with us today. प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं बहन मुनीबा महरोज, कैंपस ऑर्गेनाइजर जीआईओ वरंगल के को दावत देती हूँ कि वो हमारे दिलों में अल्लाह ताला के कलाम और नूर से रोशन कर दे। बहन मुनीबा महरोज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जिस आयत की तिलावत की गई है वो सूरह अज़-ज़ुमर की 9th आयत है, जिसका तर्जुमा इंग्लिश में और उर्दू में हम देखते चलेंगे। क्या इस शख्स की रविश बेहतर है या उस शख्स की जो मुती फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता और सजदे करता है, आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है। इनसे पूछो, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? नसीहत तो अक्ल रखने वाले ही कबूल करते हैं। In English, is one who is devotedly obedient during periods of the night, prostrating and standing in prayer, fearing the hereafter and hoping for the mercy of his Lord, like one who does not say, are those who know equal to those who do not know? Only they will remember who are people of understanding. Jazakallahu khairan kaseera. Jazakallah khairan kaseera, sister, for your recitation. Now I call upon Sister Sidra Maheen, BPD MPT in Urology, to share her expertise and valuable insights. Sister Sidra Maheen, please take over the session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Yes, you are audible. My screen is visible? No. No, not yet. Now? No. You can share it now, Sidra. Okay. Now? Oh, we are unable to see your PPT. Okay, let me try it.
Now it's visible? Yes, it is visible. Hold on. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अंबिया और बाकी सब अंबिया और रसूलों पर. As we've been seeing for the previous two programs that we have been discussing careers and career guidance. This is our effort on behalf of GIO Hyderabad to guide the people who have just completed 12th and give them an array of understanding of an array of career options that they have, and change this mindset that there are just two things that you have to do. अगर नीट क्लियर हुआ तो MBBS, नहीं हुआ तो BSc, और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए. इंशाल्लाह by the end of this lecture you will have a lot more options for you to consider for yourself and for your friends as well if you want to help guide them. Bismillahirrahmanirrahim. If you have any questions, please take them down during the session. आपको कोई सवाल है तो आप लिख लीजिए. I'll take questions at the end of the lecture. अभी आज की स्पीच का एजेंडा में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ करियर. अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर हम व्हाट इज अ करियर, व्हाई डू वी हैव टू प्लान अ करियर, हाउ टू चूज अ राइट करियर, and then we'll see some career options for those who have completed intermediate using biology, physics, chemistry, and then we'll see how some conditions apply to everybody's career. So what is a career? Career hota kya hai? It is a vocation that gets you an identity or a direction. Okay, मतलब vocation यानी एक ऐसी चीज जो आप करते हैं, मतलब it is a talent that you have, it is something that you can get done. एक ऐसी चीज है जो सब नहीं कर सकते. It is a certified thing, मतलब आप जो आपने जो सीखा है और वो आपके पास वो स्किल है, वो स्किल यूज करके आप किसी की मदद कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. तो इसे करियर कहते हैं. इट्स अ वोकेशन. A right career can ensure that you enjoy your work all your life. You must have seen so many motivational pictures and saying that if you love what you do, you'll never work a day in your life. So that is what a career is. You're doing something that you love, and then you're also gaining profit from it, you're benefiting people from it. या फिर आप मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आपको मिल रहा, आपको सैलरी नहीं मिल रही उससे, फिर भी दूसरे किस्म के आपको फायदे अगर उससे हो रहे, तो देन दैट इज योर करियर. And when you enjoy your work, money comes automatically. This is something that people don't tend to realize. वो लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले हाईएस्ट पेइंग और हाईएस्ट वो जॉब जो है वो डिग्री हम ज्वाइन करेंगे. बट पीपल टेंड टू इग्नोर द फैक्ट कि हम सेल्फ एनालिसिस करें, हम अपने आप का जायजा लें कि व्हाट आई एम गुड एट. क्या मेरी इंग्लिश अच्छी है, क्या मुझे बायोलॉजी साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या मुझे रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं किस चीज के बारे में पैशनेट हूँ. आज हम देखेंगे किस तरह उन पैशंस को, उन लव फॉर थिंग्स दैट यू फील, फॉर सब्जेक्ट्स और फॉर हॉबीज और फॉर एनीथिंग, वो चीज को हम किस तरह से एक करियर में बदल सकते हैं. वी विल सी दैट. आर्ट्स और मैथ्स का आई थिंक हो चुका है सोशल, और तो हाँ आज हम बायोलॉजी का देखेंगे. सब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हम देखते हैं 99% 90% एटलीस्ट, तो जो इंटरमीडिएट 10th खत्म होते ही बायोलॉजी चूज कर लेते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लेते हैं एज देयर सब्जेक्ट्स फॉर इंटरमीडिएट विद इन द साइंस स्ट्रीम. मैं आजकल काफी अवेयरनेस होने की वजह से मैथ्स भी सब लोग चूज करे, जिसको इंजीनियरिंग करना क्लियर है, जिसको नहीं है वो लोग बायोलॉजी चूज कर लेते हैं. और उसमें से 90% में से भी 90% लोगों का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम MBBS करेंगे. But we have to understand that in a country such big as India and such as diverse as India, with so less of colleges and so many applicants, this is not a dream that will come true for everyone. And we also have to understand that if we do not clear NEET, or if we do not get a free seat, government seat with the NEET exam, it is not the end of the world. Okay, it is not the end of your career. It is nothing. It is just
the universe or Allah Ta'ala telling you that it's fine, try another time, या फिर this career is not meant for you, go for the next option. तो आज हम देखेंगे what are these next options and why do we need this, why do we need to plan our career. ठीक है, प्लान इसलिए करना चाहिए क्योंकि it's not something that everybody has to do the same. ठीक है, अगर हम यही सोचे कि एक क्लास के 50 बच्चे, एक अब सपोज उस क्लास के टीचर ने सोच लिया कि ये पूरे 50 को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, तो क्या ये पॉसिबल है? 50 बच्चों के 50 अलग अलग पर्सनालिटीज रहते, 50 अलग अलग लोग के इंटरेस्ट रहते, सबको डॉक्टर नहीं बनना रहता अगर बनना रहा भी तो सब उस काबिलियत के सब नहीं रहते, सबको बायोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अल्लाह ताला क्रिएटेड ईच वन ऑफ अस यूनिकली. नाउ द जॉब ऑफ एजुकेशन का काम ये नहीं है कि हम लोगों को डिग्रीज पे डिग्रीज देते जाएं, मशीन्स के मशीन्स उन लोग को. एजुकेशन का एम ये नहीं है कि हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाते जाएं. एजुकेशन का एम ये है कि यू डिस्कवर योरसेल्फ थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक. ये जो एजुकेशन है इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि आपको हमेशा कंसिस्टेंटली किसमें अच्छे मार्क्स आते, आप क्या क्या चीजों में अच्छा परफॉर्म करते, व्हाट थिंग्स यू आर गुड एट. It is a lesson in self-discovery. These 10, 12, 13, 14 years should be aimed at self-discovery. They should never be aimed at getting this degree, getting a seat in this college, getting a seat in IIT, getting a seat in AIMS. This is entirely wrong. हाँ ठीक है, आपको समझ में आया कि you are good at biology, you're very good, you have a very good memory, और you're very interested, और आप बहुत compassionate इंसान हैं जो बहुत लोगों को ट्रीट करना आपका जज्बा है. एंड देन यू थिंक, यू सी कि ओके ठीक है, आई वांट, अब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. एंड देन आप एम बनाए कि चले अब नेक्स्ट एम है बाईपीसी लेना, बाईपीसी लेके नीट क्लियर करना, नीट क्लियर करके गवर्नमेंट सीट लेना. देन वो समझ में आता है. लेकिन आजकल हम पूरा रिवर्स जा रहे. ठीक है, बच्ची को डॉक्टर बनाना है, पेरेंट्स ही सोच लेते, उसके हिसाब से पूरा उसका उल्टी गाड़ी चल रही है. इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि दे आर प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स विच आर ओनली लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, विच आर ओनली लुकिंग फॉर advancement and promotion and getting more money and more money and more money and more degrees. They are not producing doctors who are compassionate. They are not producing doctors जो सच में खिदमत खल्क करना चाहते हैं. They are just producing doctors who want a corner office in a glass ceiling and a glass consultation office. That is it. So we have to change this mindset. We have to start from scratch. सेल्फ डिस्कवरी से हमको शुरू करना है, समझना है कि किस चीज में हमको इंटरेस्ट है और उसकी क्या डिग्री है, उसको मैं किस तरह करियर में बदल सकती हूँ. और ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी. हमको बहुत सारी फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ता है. हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, पेरेंट्स हमको कुछ चीजें करने अलाउ करते, कुछ चीजें अलाउ नहीं करते. ठीक है, वो भी कंसिडर करना पड़ता है. फिर उसके बाद हमारी सिटी में कॉलेजेस कौन से वो कंसिडर करना पड़ता है. कई गर्ल्स को घर के बाहर जाके पढ़ने की इजाजत नहीं रहती, तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग रेस्ट्रिक्शंस. तो इट्स यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एंड देन डिसाइड कि आप किस तरह अपना करियर पाथ चूज करेंगे. ओके, एंड देन what career you choose, you have to work in that for 40-50 years. Of course there is no limit to changing it, मगर अब आप 10-12 साल एक चीज में इन्वेस्ट करें and you're doing it, obviously सब ये सोचेंगे ना मेरे इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी if I choose to change a career now. Okay, so do something you're good at and stick to it. Of course you can change or you can diverse. काफी सारे इंजीनियर्स हम देखने को मिलते हैं जो अब स्कूल्स चला रहे हैं, और काफी सारे हमको कॉमर्स स्टूडेंट्स ऐसे दिखते हैं जो अभी काउंसलिंग करने लग रहे हैं. तो ऑफ कोर्स यू कैन चेंज करियर्स इन योर लाइफ व्हेनेवर यू वांट, लेकिन इन जनरल एक ही करियर आप जो चूज करते हैं उसमें आपको काम करना रहता है. तो यू शुड एंजॉय, यू शुड कंट्रीब्यूट टू योर वर्क, एंड इफ यू प्लान योर करियर प्रॉपरली you just become something and then you leave and then you die and then your life is over. ऐसा नहीं. आप ऐसा करियर चूज करें जिसके बारे में आप इतने पैशनेट हो कि आप उसको कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं. यू एड समथिंग टू इट. इफ यू really want to become a teacher, you do your degree, you do your B.Ed, you do your M.Ed, and then you research and then you make ऐसा कुछ आप टीचिंग में बदल के जाएं जिससे इम्पैक्ट हो, जिससे टीचिंग फील्ड का कोई फायदा हो, जिस टीचिंग के थ्रू बच्चों का कोई फायदा हो, जिससे सोसाइटी बेटर हो. ये सोच के हम प्लान करें.
कि आई एम गोइंग टू लीव एन इम्पैक्ट, आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू माई करियर, ठीक है. And you should plan so that you serve family and society better, and then your marks are obviously considered for your degrees and jobs. Now we shall see how to select the right career for you. अब हम यहाँ पे एक करियर पाथ फाइंडर का चार्ट देखते हैं विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. 10th के बाद 12th के बाद वी गो टू साइंस एंड देन कॉमर्स एंड देन आर्ट्स. कॉमर्स एंड आर्ट्स का ये वीडियो नहीं है, तो विल डायरेक्टली फोकस ऑन साइंस. साइंस में आता है एमपीसी और बाईपीसी. एमपीसी के साथ तो वी अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इंजीनियरिंग और बीई, और एमपीसी के साथ फार्मेसी भी कर सकते हैं, और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, और उसके बाद बीएससी इन एग्रीकल्चर में एमपीसी की और बाईपीसी की भी डिग्री. और हमारे स्टेट में दोनों साथ नहीं ले सकते, मगर बाकी अदर स्टेट्स लाइक इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड ऑल यू कैन पिक पीसीएमबी. तो दिस चार्ट इज शोइंग दैट पीसीएमबी के साथ आप ये सारी डिग्रीज कर सकते हैं, एंड देन यू हैव वेरी लुक्रेटिव करियर्स इन दोज डिग्रीज विच आई विल डिस्कस लेटर. अब हम सिर्फ जैसा तेलंगाना में सिर्फ बाईपीसी के ऑप्शन है हम वो देखेंगे. सबसे पहले एमबीबीएस अभी हम जैसे डिस्कस करें, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. So it's a 5-year degree course with you get a doctor's degree, and that is the undergraduation for more 5 years, 5.5 years. And then we have bachelors of Ayurvedic Medical Sciences, we have Homeopathic Medical Sciences, we have Veterinary Medical Sciences. It's called BVSC. ये सब 4-4.5 से लेके 5 साल तक के कोर्सेस हैं. ये सब करने से आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा. और फिर ये उसके बाद है बीडीएस और एमडीएस, ऑफ कोर्स डेंटल, एंड देन यू गेट पैरामेडिकल कोर्सेज. पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे कि एमएलटी, रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट. इसमें पैरामेडिकल ये भी 4.5 से लेके 5 इयर्स के कोर्सेज होते हैं. उसके बाद है नर्सिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो एक पूरा हॉस्पिटल और एक पूरी मरीज का इलाज 80% से ज्यादा नर्सिंग पे डिपेंड रहता. तो इफ यू रियली वांट टू सर्व पेशेंट्स यू कैन गो फॉर बीएससी नर्सिंग. आई हाईली रिकमेंड people who have completed and it is actually very compassionate course. It is long hours and hard work of course, but हमको मेहनत से डरना नहीं है. So you have a very good option which is BSc Nursing, and there are so many colleges in Hyderabad, especially in old city as well as out of old city. इतने अच्छे colleges BSc Nursing के available है. So I highly recommend people who really want to serve humanity to get jobs in BSc Nursing, get degrees in admissions in BSc Nursing. And then there is diploma in nursing. वो सिर्फ 2 years का होता है. वो करके भी आप as a nurse work कर सकते हैं, as a part-time nurse or as a you can dictate your terms. BSc Nursing थोड़ा degree है और diploma is like a course. And then there is medical lab technology, bachelor's in medical lab technology. That is also, it's called BMLT or BSc MLT. And then there is BSc in home science, there is BSc, and then there is just general BSc. BSc degree आजकल सब ये पूछते हैं कि BSc करके फायदा क्या है. तो that is a question that I will further answer as we go to the next slices, but we'll just finish over here. BSc के बाद there are options of doing MSc, MPhil, MD, that is an MPhil and PhD. इसलिए अगर आपको रिसर्च में डॉक्टरेट करना है तो देन उसके लिए बेस्ट स्टार्ट यू कैन गेट इज BSc, एंड देन यू कैन गो फॉर BSc करने के बाद MTech का भी एक ऑप्शन है. इफ यू डू बायोटेक्नोलॉजी उसमें यू कैन गेट MTech में एडमिशन. एंड लाइक आई सेड बिफोर, 50 लोग सब एक ही चीज करेंगे ऐसा नहीं. सो दैट इज व्हाट इज इट कॉल्ड, हर्ड मेंटालिटी. ओके, हर्ड मेंटालिटी से क्या होता है, देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ प्रोफेशनल्स that are having the same degree. ओके, एंड देन एवरीबॉडी विल बी लाइक, अब बस हम बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, हमको डॉक्टर्स नहीं चाहिए, अब हमको नर्सेस चाहिए. बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, हमको बहुत सारे नर्सेस हो गए, हमको नर्सेस नहीं चाहिए, अब हमको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए. सो दिस विल हैपन इफ यू गो बाय हर्ड मेंटालिटी. सो इग्नोर व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग, ignore what your ma'am is asking everybody else you to do. Be your own person, think what you want to do, okay, and try to pursue your dreams in that. Have independent thinking. After completion of intermediate sciences, there will be plenty of career options open to you, like we just read above. And BSc करने के ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ BSc करके क्या फायदा. BSc करने के बाद आप कितने चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, UPSC, ठीक है. आप B.Ed करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग
you can complete your BSc सुकून से, and then you can go for B.Ed. B.Ed करने के बाद you can get an amazing teaching job at a school, and if you do M.Ed you can get a professorship or a lecturership at a college or a university. Okay, so सबसे पहले हम BSc के बारे में ही देखेंगे. सारे सब्जेक्ट्स उसमें अवेलेबल रहते हैं. You have to pick 3. I think मैथ्स में भी BSc कर सकते हैं, तो BSc in maths. I'm sure Rashad sir must have covered that. And then BSc in nutrition and dietitians. तो BSc nutrition ये भी काफी मतलब आजकल इसकी अवेयरनेस हो चुकी है, काफी लोग कर रहे हैं. और in this world of advancing technology and sedentary lifestyle and junk food and restaurants popping up everywhere, nutritionist का आजकल काफी वो है. और हर पेशेंट जो भी अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो काफी डिपार्टमेंट्स को कवर करता है, तो देन all of your nutritionists will only decide your diet. As in हर प्रेग्नेंट लेडी को, हर सर्जरी पेशेंट को, हर कैंसर पेशेंट को, सबको एक न्यूट्रिशनिस्ट असाइंड होता है. और it is also a job where you have to wear an apron and go to the patient and check their diet chart and give them a new diet chart, plan their diet accordingly. और वो इट्स डायरेक्टली पेशेंट से कांटेक्ट करने की आपकी ये जॉब रहती. नहीं तो उसके अलावा भी न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बहुत सारे ये है कि आप अपने घर का न्यूट्रिशन अच्छे से प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने एडल्ट्स का. आपके घर में जो भी पेशेंट्स हो, हार्ट के पेशेंट्स हो, बीपी के पेशेंट्स हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हो, उनके लिए आप डाइट प्लान कर सकते हैं. और सो न्यूट्रिशन इज समथिंग दैट that will also help you be a great homemaker. So that is a very course that everybody recommends doing, BSc nutrition. And then you also have a great career option in that. If you choose not to work, then also काम आएगा. If you choose to work, then also बहुत काम आएगा. And then the next is BSc or BA in psychology. आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया और डिप्रेशन और एंजाइटी की इस एज में इतने लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स है, इतने लोगों को कि everybody goes to therapy, everybody is assigned therapy, everybody needs counseling. And because of advancing more and more advancement in all these problems, जैसे जैसा पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, पॉपुलेशन के साथ उनके प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाते हैं. तो BSc साइकोलॉजी, BA साइकोलॉजी 3 साल का कोर्स है. एंड देन यू स्पेशलाइज यूजिंग मास्टर्स, MSc और MA, and then you can become a certified counselor in clinical psychology, or you can do family psychology, marriage psychology. And then you have to understand कि people need therapy, okay, people need counselors. छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए आजकल लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि प्लीज गो टू थेरेपी, प्लीज गो टू अ काउंसलर. ओके, ड्रग एडिक्शन इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, सारे ड्रग एडिक्ट्स को काउंसलर्स के पास भेजाया जाता है. एंड देन देयर इज मैरिज प्रॉब्लम्स. लाइक आई सेड, every married couple who is having issues is suggested to go to a marriage counselor. Every sas bahu relationship that is having problems, the sas is advised to go to counseling, the bahu is advised to go to counseling. Family counseling इसे कहते हैं. So psychology is a very lucrative course. It's very interesting. It's very in demand, and the demand is going to only increase, and you're going to earn. If you make a career out of this, I'm not telling you to get a job. आप counseling, आप certified counselor डिग्री मिलने के बाद, certified counselor बनने के बाद, you can do it at home. आप फोन पे या फिर अपने घर पे लोगों को बुला के, लाइसेंस लेने के बाद अपने घर पे लोगों को बुला के काउंसलिंग कर सकते हैं. इट्स योर मतलब यू कैन डू अ वेरी इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट जॉब ऑफ इट. आपके आवर्स, आप जब फ्री है, जब यू कैन वर्क, एंड आप अपने हिसाब से उसका चार्जेस भी रख सकते हैं. there is nobody will dictate saying you that you're very expensive, but if you're that good, matlab therapy is expensive, okay, 1,000 rupees per hour is nothing. It's very less. 1,000 rupees तो basic है therapy के लिए. And then there is dental surgery, of course. हम जानते हैं कि जिसको भी MBBS नई सीट मिली, वो लोग BDS के लिए many people go for it. Some people actually aspire to become dentist, कि उनको MBBS में सीट मिल भी जाती है तो भी will be like नहीं dentist बनना है, because dentistry is also having that kind of कि आप अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. तो खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करने डेंटिस्ट्री में इट्स वेरी गुड, बट द इन्वेस्टमेंट इज अ लॉट. जैसे मैंने अभी बोला, साइकोलॉजी में देयर इज नो इन्वेस्टमेंट. Okay, you just need a room, a sofa, and you're good to go. But here
the machines and the equipment cost around lakhs. Okay, they can also reach crores. So it's not really an option to work from home or set up your own practice very soon. You have to first work and then, jama karo the entire investment, and then you can go for setting up your own practice. And then there is radiography. हम समझते हैं कि MBBS करे बाद ही MD in radiology कर सकते हैं, लेकिन नहीं. There are other radiology courses which can do even after BSc. There is diploma, there is post graduation in radiology, there is also BSc in radiology. And as you know now, हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्कैन ही लिख के देते हैं. Everybody goes for radiology, be it ultrasound, be it Doppler studies, be it ECG for the heart, or or be it MRI for the brain or the lungs. हर चीज को हमको radiology is the new future. So radiology is a very lucrative career, and that is also a less investment kind of thing. You just need one machine, and then you can start your radiology business once you're degree certified and licensed. And then paramedicals. In paramedical, हम कोविड के टाइम से हमको ये सीखने को मिलता है कि doctors were very hard to reach. Doctors were like so busy and stuck in ICUs, and they were having shifts, and वो लोग अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे. कोविड के टाइम हमको ये देखने को मिला कि डॉक्टर्स को पहुंचने से पहले और 6-8 लोग और रहते थे जो हमको हेल्प कर देते थे. ठीक है, तो ये वो लोग हैं पैरामेडिकल्स जो इमरजेंसी हम एम्बुलेंस बुलाने पे अवेलेबल रहते हैं. ओके, दे कम विद द एम्बुलेंस. दोज आर द पैरामेडिक्स. They know emergency medicine. Okay, they know how to survive a patient. They know how to intubate a patient, cannula lagana, or ventilator का वो डालना. तो this is paramedics. That is emergency, or they are very very in demand. Emergency hospital services, वो लोग emergency ward में paramedics को किसी भी तरह रखते हैं. It's mostly kind of a waiting job. It's like firemen and paramedics. They mostly have to wait for an emergency to come, and then they have to act. लेकिन it's a very very मतलब next to MBBS अगर वो course है तो फिर paramedics ही है. And then dermatologist. We also have this misconception that you have to do MBBS and then do MD dermatology. लेकिन नहीं, there are other dermatology courses. You can look it up कहाँ available है. If you're interested in skin treatments, आजकल है ना, everybody is obsessed with skin. What is your skin routine? What is my skin routine? So yeah, skin routines में जो भी interested है, they can do a study about skin, and then they can go ahead and be a dermatologist. And then there is pharmacy. Of course, MBBS और BDS के बाद next option pharmacy. Seats भी उसी हिसाब से distribute होते हैं. Pharmacy, those who are very passionate about, those who are good at chemistry and they love medicines, and they can go for pharmacy. और pharmacy में भी ऐसा ही है कि business आप start कर सकते हैं on your own, लेकिन it's a very expensive setup to start, but you can work in other pharmacies, or you can work in hospitals as their resident pharmacist. इसमें B pharmacy और pharma D दोनों ही options available है, bachelor's and doctorate. And nursing का मैंने शुरू में बोला था कि nursing is like 90% of the medical community is nurses, and they're the ones running the entire hospitals. They're the ones जो शुरू से end तक patient को take care करते हैं. They're the ones doing the 12 to 18-hour shifts. They're the ones attending to you every time you call. You press the call button. The doctor comes for 2 minutes and he leaves. Okay, but nurses are the ones who are doing the actual grunt work. Grunt work हम जिसको बोलते हैं patient की देखभाल करने का grunt work, असल काम nurses करते हैं. और भी करियर्स में बोलने से पहले ये आप लोगों को या बोलना चाहूंगी, आप लोग अमीर जमात का रीसेंट फ्राइडे का खुतबा सुने होंगे. तो उन्होंने उसमें क्या बोले कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अलग कर दिए और तकबीर पढ़ने वाले लोग अलग हो गए. तो तशकील और तकबीर ये दोनों अलग हो गए. तो हम अगर करियर्स डिसाइड कर रहे तो आप ये सोच के डिसाइड करिए कि मैं कैसे अमीर जमात जो बोले हाउ आई कैन डू दैट, मैं कैसे एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ. बीइंग अ मुस्लिम एजुकेटेड स्टूडेंट, हाउ कैन आई मर्ज दीज टू, हाउ कैन आई मर्ज अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए एक दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना. ठीक है, तो आप ये सोच के अपना करियर प्लान करिए. ये नहीं सोचिए कि मुझे जॉब सिक्योरिटी किस में मिलेगी, मेरे पेरेंट्स किस में खुश होंगे, ओके मेरे फ्रेंड्स जो करे मैं वही करूं.
ये अच्छा दिख रहा, इट फील्स लाइक अ वेरी कूल जॉब, तो मैं ये कर लूँ, ये सब आप छोड़िए और आप ये सोचिए कि किस तरह से अमीर जमात ने हमको गाइड किया कि हम दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो लोग उनके एज मुस्लिम स्टूडेंट्स हम कैसे दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम अपना करियर चूज करें। ओके, तो उसमें और नेक्स्ट नेक्स्ट करियर्स वी कैन गो एंड लुक बैचलर्स इन यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये सब। इसके लिए द थिंग इज आफ्टर एमबीबीएस इसके सीट्स अवेलेबल रहते, बट दीज थिंग्स आर ओनली इंडिया। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही इसका इम्पोर्टेंस है, और ये डिग्रीज और ये दे आर नॉट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज। ठीक है, आप अगर सऊदी में जाके मैं होम्यो प्रैक्टिस करूंगी बोले तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए केयरफुल रहना। और इफ यू बट काफी डॉक्टर्स, काफी ऐसे मैंने देखे हैं जो दे जस्ट स्टडी BUMS और BHMS और BAMS, बट देन दे प्रैक्टिस पूरा MBBS शुरू से ही। So that is also something you can do only in India. Unless and until you don't have a degree of actual MBBS, you cannot practice MBBS anywhere else in the world. India में आप ये कर सकते हैं. So if you are looking to settle in India and you are getting a seat in Unani, Homeo, Ayurveda, Naturopathy, go ahead. आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आगे जाके if you are passionate about it. मतलब plants और herbs और kitchen spices और ये सब चीजों से drugs बना के लोगों को help करना. If you are into that, sure, go for it. If not, you can just finish your studies over there. वो लोग anatomy, physiology पूरा पढ़ाते हैं, and then soon after you finish, you practice MBBS, मतलब allopathic medicine, modern medicine जो है आप वो practice करें तो you can build your career, but only in India, around that. And then there is ophthalmology, eyes. Okay, हर एक बच्चे को फोन की तरफ से और टैब देखने की तरफ से ऐनक लगने का, तो this is also a very lucrative career. हर एक को आई टेस्टिंग कराना है, हर एक को ऐनक खरीदना है. So there is, I think, BSc in ophthalmology available. हैदराबाद में भी इसके कॉलेजेस है, that is an option. And then there is biotechnology. ये जो कोर्सेस है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, क्यूलिनरी साइंसेस, ये सारी चीजें ऐसी है जो आई फील लाइक अमीर जमात हमको जिस डायरेक्शन में गाइड करना चाह रहे थे कि कैसे हम एक ऐसी चीज इजाद करें जिससे उम्मत के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जाके हम ऐसी ऐसी दवा इजाद करें जिससे उम्मत के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. जैसे आजकल हर कोई हार्ट पेशेंट है, तो हम ऐसे स्टैटिन्स, उसके साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं वो लोग, तो साइड इफेक्ट्स, बिना साइड इफेक्ट्स वाली दवा हम इन्वेंट करें, या फिर हम ऐसी सीड और ऐसा प्लांट इन्वेंट करें जिससे फार्मर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के और एग्रीकल्चर साइंसेस पढ़ के. जैसा हम देखते हैं कि इंडिया इज लाइक 80% एग्रीकल्चरल नेशन, तो इतना एग्रीकल्चर का हमारे देश में इम्पोर्टेंस है, तो हम क्यों ना उन लोगों की मदद करें और क्यों ना उन लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको हेल्प करे, ऐसे सीड्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे ब्रीड्स खड़ा करें उन लोगों के लिए जो उन लोग को ज्यादा यील्ड दे, ज्यादा फायदा करे हमारा, और नुकसान भी ना दे, केमिकल्स बगैर यूज करें, बिना फर्टिलाइजर्स, बिना केमिकल्स के हम क्रॉप्स रेस करें. ऐसी चीजें हम ये पढ़ के इजाद करें. I feel like that's what he was trying to tell us. Or everybody is a foodie आजकल, right? Everybody is an Instagram foodie. Everybody is a food blogger. So go do your degree in food technology. Find colleges which are having food technology and food engineering, and make food your passion and your career. और इसमें भी काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं. culinary sciences is about becoming a chef. People are so into cooking and मतलब ये स्टीरियोटाइप ये है ना कि बच्चियां तो क्या ही करेंगी, बड़े होके पकाएंगी चूल्हे में, तो ठीक है पकाएंगे, एंड देन वी आल्सो गेट मनी आउट ऑफ इट, विल मेक अ करियर आउट ऑफ कुकिंग. सो जिसको भी बहुत पकाने करने का शौक है और दे आर इनटू बेकिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग, look for culinary schools. हैदराबाद में तो इतने खुल गए हैं culinary schools. You just have to after 12th there is some entrance test, and हर अलग अलग schools का अलग अलग है, and then if you have good marks in BPC you can get into culinary school and you can get a degree as a chef. You can work in professional restaurants, but that is kind of a tricky industry to get into because वहाँ पे हलाल हराम की काफी boundaries blur हो जाते हैं hospitality and management में. लेकिन culinary sciences is a thing that you can do if you're very passionate about food. And then there is marine biology. People who love fishes and diving and scuba diving and submarines, fishes and all, they can go into marine biology. That is also a
वेरी मतलब प्रैक्टिकल काइंड ऑफ करियर नहीं है, उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा और उसके अंदर सर्च समुंदर से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसके लिए आपको यू विल हैव टू शिफ्ट, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स टू डू. And then there is forensics, of course. Forensics is you will have to work with the government to crack cases, and forensics is also, imagine like CID but in real life. So that is forensics. You can go for forensics. That is very 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 popular. Biomedical engineering, ये भी एक ऐसा करियर है जिसको I feel like हम बहुत इससे उम्मत की हेल्प कर सकते हैं. ये MPC वाले भी कर सकते हैं, BIPC वाले भी कर सकते हैं. तो इसमें you get a degree and then you get to invent और make equipment जो patients को help करे, जैसा कि bionic arms, okay, prosthetic legs, ऐसी चीजें जो माजूर इंसानों को देखने में, चलने में, पकड़ने में हेल्प करे. स्पेशलाइज्ड स्पून्स, जिसका हाथ काम नहीं कर रहा, वो लोग ऐसा स्पून बना देते हैं कि वो आजकल तो AI आ गया, तो everything is linked with AI, right? Everything is artificial intelligence. You think and it happens, okay? And it takes जो आप पहले करे थे वो उन्हें सेव करके रख लेता और वही बाद में, and it improves upon what you did before. So that kind of technology, if you can integrate and you can create things that are affordable. एक इंसान है जो prosthetics बहुत महंगे थे, तो what he did, he created prosthetic for his brother using Legos. Legos which are blocks, प्लास्टिक के blocks जो बच्चे खेलते हैं, तो उसने Legos यूज करके एक prosthetic arm बनाया. So that is literally plastic, okay, and it is very cheap. He made an arm out of Legos, out of plastic blocks, जो toys रहते हैं. तो इस तरह की क्रिएटिविटी, इस तरह की मेडिकल टेक्नोलॉजी, इस तरह की हमको उसकी जरूरत है और उसको हम उम्मत की हेल्प करने के लिए लगाना चाहिए. एंड देन देयर इज फिजियोथेरेपी, which I have completed, alhamdulillah, masters in physiotherapy. But there is a bachelor's course and then there is masters, and you specialize. So in physiotherapy, it is about movement. You have to make the patient move from after whatever illness they have had. Physio means physical, yani ki harkat, or therapy is, healing. So it's healing through movement. So that is what we specialize in. Before surgery, after surgery, or even just to make a person healthy before delivery, after delivery of a child. मूवमेंट से, एक्सरसाइज से किस तरह से हम किसी चीज को हील कर सकते हैं, दैट इज व्हाट एंटायर फिजियोथेरेपी इज अबाउट. इट्स अ कंप्लीटली मेडिकल, कंप्लीट मेडिकल, इट्स अ मॉडर्न मेडिकल का ब्रांच है. इट्स लाइक डेंटिस्ट्री, बट इट इज नॉट वेरी celebrated like dentistry or is. Eventually I think it's getting there, slowly. But anyway, it's a whole branch, it's a whole science. आपको research करना है उसमें, आपको new you have to come up with new techniques. There is a whole world of physiotherapy out there which you can enter and get better at, and you can conquer, and there is so much to do in physiotherapy and so much to discover. By doing physiotherapy masters in neurology, one thing that clicked me a lot was हम अपने brain का सिर्फ 10% हिस्सा use करते हैं. Okay, so when somebody gets a stroke और किसी को paralysis का attack आता है, तो जो हम हिस्सा use कर रहे हैं वो block हो जाता है. ठीक है, that हिस्सा is paralyzed. Now we have 90% of the other brain and the nerves left to tap into. So that is called neuroplasticity, and that is what most fascinated me about neurology. Okay, so now जो pathways अटक गए, आप new pathways discover करें. So you're actually creating new nerve pathways for your arms to work or your legs to work. So neurology is a very 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 untapped subject. Okay, so इतना स्कोप है उसमें, इतना स्कोप है. आप कितना रिसर्च करो, कितना पढ़ो, you'll keep discovering. 90% of the brain हमसे मतलब उस तरफ है, हम सिर्फ 10% डिस्कवर करें, बाकी 90% अनडिस्कवर्ड है. इतने fascinating experiments, studies available है. So I encourage people to get into biomedical engineering as well as BSc in physiotherapy. And then there is medical lab technology. Hyderabad mein to there is a lab in every single gully. If you see now, every nook and corner is having a lab. So a lab needs a lab technician. So this is what lab technicians do. They do blood tests, they take samples, and then they सारे टेस्ट उन लोगों को करना आता है.
ब्लड से रिलेटेड यूरिन स्टूल सैंपल्स, जो भी गॉल ब्लैडर, सब सैंपल्स वो लोग करने आता है। सैंपल्स जो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और नर्सेस कलेक्ट करके भी जाते हैं उसको टेस्ट करना आता है। दे नो हाउ टू चेक फॉर, they are basically pathologists, okay, they have to study pathology a lot, and pathology, MBBS करने के बाद MD in pathology जो करते हैं they are actual pathologists, लेकिन these are the people who are along in the team of the lab along with the pathologist to discover कि actual medicine का cause क्या है, actual disease का cause क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है जिससे ये इन्फेक्शन हुआ, या फिर कौन सा वायरस है जिससे ये पर्सन बीमार हुआ। एंड देन उनके पैथोलॉजिस्ट या MLT लैब टेक्नीशियन की फाइंडिंग से हम दवा लिख के उनको दे सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की ये दवा है। तो MLT is also a very good career and there are endless job opportunities in BSc MLT. So you can go for BSc MLT. And then of course there is veterinary sciences. Everybody these days is, I love dogs, I love cats. Okay, go ahead, go for BVSC. Okay, bachelor's in veterinary sciences. That is also a 4.5 years course. You'll actually become a doctor after that. ये भी बहुत ही एक ऐसी चीज है जिससे हम खिदमत खल्क कर सकते हैं। ऑब्वियसली खल्क, एनिमल्स भी तो खल्क ही हैं, तो आप कितना एनिमल्स को अब सफरिंग से निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी, आई थिंक, नेक थिंग टू डू। हम सब वो हदीस जानते हैं जहाँ पे एक औरत जो बहुत गुनाह करती थी लेकिन उसने सिर्फ अपने शू में एक प्यासी बिल्ली को पानी दे दिया, तो प्यासे कुत्ते को पानी दे दिया, तो अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद आया। तो compassion to animals is also something which I feel like we never ever consider, and we should consider that. हम animals को suffering से किस तरह निकाल सकते हैं, that is what BBSC is about. So you can go into that as well. And here BE तो of course maths करने से मिलता है, लेकिन I have highlighted some things, some ignore construction and ceramic उसके and transport, लेकिन थोड़े BPC से करने वाले बीटेक डिग्रीज हैं जैसा कि सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग में you can get admission with only biology, but it's only very in selected colleges and you have to complete a maths bridge course or something like that to get into it. मगर अगर आप BPC के साथ maths भी ले रहे हैं तो then all engineering options are open for you. And then of course there is medicine, like we have discussed before. There is a 4+1 year professional degree. You'll get a doctor before your name. There is modern medicine, allopathy तो खैर आजकल हम नहीं बोल रहे हैं, MBBS को modern medicine बोल रहे हैं. And then उसके साथ साथ like I said यूनानी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा एंड BDS तो है ही. कॉलेजेस आप लोग जानते हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन इंडिया आर एम्स एंड निमहैंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ. एंड देन BSc करने के बाद जो भी लोग बोलते हैं BSc क्यों करना, BSc करके फायदा क्या है, जैसा कि मैं बोली, सबसे पहला फायदा ये है कि आप BSc करे बाद टीचिंग में जा सकते हैं. BSc करके MSc करके B.Ed, BSc करके B.Ed कर सकते हैं, BSc करके MSc करके लेक्चरशिप, like I said. And then the next option is you can do any of these civil services exams. आप BSc करते हैं, you will be eligible for all government options. Okay, UPSC को आप दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं. ये कर्नाटका के लिए स्लाइड बना था, बट तेलंगाना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम है वो आप दे सकते हैं. IFS, IPS, रेवेन्यू सर्विसेज. And then if we look at scholarships, there are so many scholarships available. If you are having financial troubles, you can apply for any of these scholarships. Minorities, Maulana Azad. And then there is there are companies, HDFC offers so many scholarships for so many people, so you can sign up for those. And in the end, we have to remember that it is not the people who always get 90s and A1s and 100s who get the best careers. Okay, बेस्ट करियर्स इनके होते हैं जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो अपने आप को अंदर से जांचते हैं, परखते हैं कि व्हाट आई लाइक, व्हाट आई एम गुड एट, जो सब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. स्कूल के 10 साल, फिर उसके बाद इंटर के 2 साल, ये पूरे 12 साल जो सब चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, जो सब एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं. ठीक है, सिर्फ पढ़ाई को एक अलग 8 घंटे का एक टॉर्चर, एक जाना है, आना है, करना है, वो वैसा बना के रख दिए, ये नहीं होने वाला है. आप पढ़ाई को अपनी जिंदगी में इनकलकेट करें, देखें कि वो कैसा अप्लाई करती है, कैसा प्रिज्म से रेनबो बनता है. ओके, एंड हाउ दिस प्रिज्म का रेनबो वाला आसमान में कैसा हो रहा. ये सारी चीजें अगर हम समझने लगे, आप जो एजुकेशन में, आप जो क्लास में सीख रहे, वो आके घर में देखे कि वाओ, हाउ इज दिस हैपनिंग, हाउ इज व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग. तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों के करियर्स अच्छे बनते हैं. ठीक है, एंड देन दोज हु एक्सप्लोर एंड देन दे कंसीडर ऑल अल्टरनेटिव्स.
ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा लगता है कि हम 12th बाईपीसी से कर लिए, अब सिर्फ 3 ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन, इट इज नॉट लाइक दैट, देर आर so many options. I actually, while researching for this lecture, I actually saw a video which was saying there are 50 careers. मैं तो 10-15 नहीं cover कर सकी because I had like 45 minutes to speak. But there are 50 careers जो आप biology करके कर सकते हैं. तो do your research. जो सिटी में आप हैं वहां पे देखिए क्या क्या कॉलेजेस अवेलेबल है, वहां पे आप फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स जो जो चीजें आपको अलाउ कर रहे हैं नहीं अलाउ कर रहे हैं उस हिसाब से आप देखिए। उसके बाद कॉलेज कितनी दूर है घर से वो भी थोड़े लोग कंसिडर करते हैं, तो वो कंसिडर करिए। ये सारी चीजें कंसिडर करके कम अप विद द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑफ डिग्रीज यू वांट टू डू, यू वांट टू अटेंड, एंड देन यू कैन गो फ्रॉम देयर। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सप्लोर। बस हम 2 चीजें देख लिए, ये बाजी ऐसा करे, ये बाजी ऐसा करे, मुझे ऐसा करना है, खत्म। दैट इज नॉट हाउ यू मेक करियर्स, ओके। एंड देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट करियर सुटेबल टू देम, ensure that they have the aptitude for it. Aptitude एक ऐसी चीज है जो हम एजुकेशन से डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हमको बेरली पास हो रही है इंटर में, पूरे में बेरली पास हुए, 25 मार्क्स लाके बेरली पास हुए, और हम एक्सपेक्ट करें कि हम डॉक्टर बन जाएंगे और हमको एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी। तो कीप योर एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, ओके। बाईपीसी में आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप एमबीबीएस की ख्वाहिश नहीं कर सकते, आपके पास उतना एप्टीट्यूड नहीं है, ओके। तो ये जरा ये भी आई फील लाइक इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन आवर जनरेशन। आई डोंट नो हाउ टू explain it to them or how to tell them that sister you just can't do it, okay, but aptitude आप prove करना चाहिए। aptitude is something जिससे आपको मार्क्स आपके मार्क्स जरूरी है और वो कट ऑफ रहता, ठीक है। उसके बगैर आपको नीट में आपको रैंक आएगा, नीट में रैंक नहीं आएगा तो ऑब्वियसली कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सो एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन। जो चीज में जितना रिक्वायर्ड है उतना, ये सब डिग्रीज में इतने सारी जो मैं डिग्री कोर्सेज बोली उसमें सब कितना है मालूम, 50% इन बाईपीसी और 70% इन बाईपीसी और 80% इन बाईपीसी। दैट इज नॉट हार्ड टू डू, दैट इज एप्टीट्यूड, उतना तो आप कर सकते हैं। एंड देन वर्क स्टेडीली एंड कंसिस्टेंटली टुवर्ड देयर गोल। These are the people who get good careers, who are steadfast. It's like the horse and the no, rabbit and the tortoise, okay? कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, टोटोइस के वैसा, रैबिट के वैसा तेज भाग के खत्म कर लेना नहीं है, ओके। एंड देन एक जगह पे रुक जाना नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे से गाइड करें, और आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज लेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Okay, hi Nausheen. I'm interested in nutrition. I took BPC, but my family doesn't see nutrition as a good career because, okay, okay, आप अपनी फैमिली को या आप आपके जो भी है उन लोगों को कोई ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलाइए जो अभी वर्क कर रहे हैं, जैसा कि किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में हो जो एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आप उनसे बात कराइए और उनको समझाइए कि कैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअली पेशेंट्स के साथ काम करते हैं और वो बहुत ही फायदेमंद करियर है। एंड दे ऑल्सो गेट गुड जॉब्स। एंट्री लेवल सैलरी तो खैर 18 to 25 के बीच में ही रहती, लेकिन इफ यू आर एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू बिकम अ सीनियर एंड यू गेट when you get a promotion, you can earn a lot more in nutrition. Okay, next question. MPhil ki details. Okay, so for MPhil you have to complete your bachelor's and then master's. Master's is compulsory. Uske baad you can go for MPhil is master's, sorry. So bachelor's के बाद ये degree मिलती है. You can look up for colleges which are giving you MPhil and PhD degrees. PhD के लिए तो काफी थोड़े universities available हैं, और उसमें आप आपका वो देख लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर वो रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट करना। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी करने के लिए यू नीड अ मास्टर्स। सो माय लेक्चरर who wanted a PhD, she joined University of Hyderabad for PhD in public health medicine. So that is PHM, public health medicine में उन्होंने ज्वाइन करा, तो उसके लिए मास्टर्स जरूरी था। तो she has completed MPT, masters in physiotherapy in neurology. So she went with masters in physiotherapy in neurology, and then she went and she showed her
मतलब आप जो रिसर्च करें वो रिसर्च आपको बताना जरूरी है ताकि आपको पीएचडी में एडमिशन मिले। तो मास्टर्स आप जो कर रहे हो उसकी रिसर्च, उसका आपके जो थीसिस है वो थीसिस आप पीएचडी में सबमिट करना इंटरव्यू में। सो पीएचडी के लिए एक इंटरव्यू होता, तो पीएचडी के लिए ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो जाते, तो यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू, एंड देन इंटरव्यू के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप अपने मास्टर्स की थीसिस में क्या करें, एंड देन इफ दे आर इम्प्रेस्ड दे विल लेट यू इन, एंड देन आफ्टर दैट यू गेट अनलिमिटेड टाइम। पीएचडी करने के लिए देयर इज नो लिमिट। तो आप एक रिसर्च करें, आप शुरू शुरू से एक हाइपोथेसिस निकालें, सैंपल्स कलेक्ट करें, आरसीटी करें, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करें, यस नो क्वेश्चंस, सर्वेज। तो इसके लिए आपको बहुत ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है। उसके बाद आप पीएचडी डिग्री, आप बहुत ही मेहनत के बाद, और आप ये क्या है पीएचडी कंट्रीब्यूशन, जो मैं अपने शुरू के स्लाइड में बोली थी। पीएचडी करने से आप आपकी फील्ड में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप आपकी फील्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके ओके, बी फार्मेसी, लाइक आई सेड फार्मेसी इज अ वेरी गुड करियर। आप बी फार्मेसी करके अपने हॉस्पिटल्स में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, जो हर पेशेंट को दवा जितनी रिक्वायर्ड है उतनी उनको वो करके देना। बट काफी लोग फार्मेसी थोड़े थोड़े दिन जॉब करके दे ब्रिंग अप देयर ओन सेटअप। जैसे कि हम देखते हैं कि हर हर कोने में मेडिकल हॉल है, तो मेडिकल हॉल के लिए यू नीड टू हैव अ फार्मेसी का लाइसेंस। तो दोज हु डू बी फार्मेसी एंड फार्मेडी दे कैन गेट मेडिकल का लाइसेंस, एंड देन दे कैन गिव मेडिसिन टू इवन रास्ते चलने वाले लोग, और फिर हॉस्पिटल के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। Pharmacy is good, madam. Okay, yes, pharmacy is good, but it's kind of long. It's like masters and bachelors combined. तो आप अगर 6 साल कमिट कर सकते हैं फार्मेडी के लिए, तो फिर आप फार्मेडी करिए। एंड इट इज डिफिकल्ट, उसमें मैथ्स है, उसमें रिसर्च है, ओके उसमें इंटर्नशिप है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इफ यू हैव 6 साल, उसमें आपको कोई इंटरप्शन नहीं होंगे, they will not force you to get married or force you to have kids, then go ahead, go for pharmacy. And then what is the scope after doing BSc in anesthesia? Okay, like I said, okay, I did not say that, but anesthesia is a good field क्योंकि सारे surgeries anesthetics के साथ ही होते हैं. I don't think BSc in anesthesia is available, but MBBS करने के बाद एक छोटा सा कोर्स है जिससे आप एनेस्थेटिशियन बन सकते हैं। और आप हर सर्जरी से पहले जाके पेशेंट के पूरे वाइटल्स चेक करके, उनका वेट कैलकुलेट करके, उनका चेक करके proper amount of anesthesia. A lot of the patient surgery depends upon anesthesia. थोड़े पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एनेस्थीसिया के ड्रग से एलर्जिक होते हैं, तो उनका, और अगर थोड़ा कम या थोड़ा भी ज्यादा दे दिए, अगर थोड़ा कम दिए तो दे कैन फील द सर्जरी, थोड़ा ज्यादा दे दिए तो लोग के ब्रेन को इफेक्ट हो सकता। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, एंड दोज हु आर वेरी गुड एंड वेरी एक्सीलेंट एट इट, दे आर सपोज्ड टू डू anesthetics. And then BPD. I did talk about BPD a lot because I have done BPD. आपका क्वेश्चन क्या है प्लीज वो पूछिए। इंटर वोकेशनल से कर रहे MPHW, इसके बारे में आपसे मशवरा चाहती हूँ। MPHW, I know this is multipurpose health worker, right? Okay, yeah, so that is also very good. Like I said, paramedical, ये paramedical में आता है, इसमें multipurpose health workers काफी कुछ कर सकते हैं। If you finish, आप सीधा सीधा खुद खिदमत खल्क में एंटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, यू अर्बन हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, या फिर आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं एज अ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। इतने, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू क्या क्या करते हैं MPHW लोग। बच्चों को इंजेक्शन देना, वैक्सीनेशन देना, बच्चों की हाइट चेक करना, वेट चेक करना, और they have so many things, and they have filing, they have patients के records maintain करना, there are many things that they can do. शरिया में लॉ करना है, डिटेल्स प्लीज। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ बायोलॉजी सेमिनार, तो शरिया लॉ आई एम नॉट good at. I hope somebody else can help you with this question. I can share this PDF, yes. Scope and physiotherapy. Like I said, फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा स्कोप है आजकल। हर पेशेंट की को फिजियोथेरेपी, या तो आप आउट पेशेंट में जाएं, आप सर्जरी में जाएं, आप गायनोकोलॉजी में जाएं, आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाएं, you have a physiotherapist coming and checking you. So there is no end of scope for physiotherapist. Of course, आप as a physiotherapist, hospital physiotherapist काम कर सकते हैं, and then after you gain a bit of experience, you can open your own setup, you can have your own patients. Every single person nowadays is having knee pain, back pain, ankle pain, shoulder pain. You can treat all those pains. You can take as much money from those patients as you want. If you're good at it, आप कर सकते हैं, तो they will pay you.
If you're good, if you're talented, they will pay you whatever you ask for. Okay, so there is an unlimited scope in physiotherapy. Go for it. That is all I can say. Difference between clinical and applied nutrition. You will have to ask a nutritionist specialist expert about this, but the how much I can tell you is clinical nutrition is आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, एंड अप्लाइड न्यूट्रिशनिस्ट इज आप जैसा कि स्पेशल लोगों के साथ काम करते हैं, जैसा कि एथलीट. अब एक एथलीट को अंडर 55 कैटेगरी में compete करना है. सोचिए बॉक्सर है, अंडर 55 उसका वेट रहना है, तो आप उसकी न्यूट्रिशनिस्ट है, तो आप उसके पूरी डाइट ऐसा प्लान करना कि उसका वेट 55 इच रहना. ठीक है, तो ये अप्लाइड न्यूट्रिशन है. या फिर कोई एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाना है, उसके लिए आप डाइट प्लान कर रहे हैं. या फिर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, उसके लिए आप डाइट प्लान कर रहे हैं. तो ये क्या है, अप्लाइड न्यूट्रिशन है. क्लिनिकल में सीधा सीधा पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स की डाइट है, और सर्जरी पोस्ट सर्जरी पेशेंट की डाइट है, प्री सर्जरी पेशेंट की डाइट है, हार्ट कंडीशन के पेशेंट की डाइट है, ये क्लिनिकल है. और अप्लाइड में इट्स नॉट नेसेसरली पेशेंट्स, बट इट इज स्पेशल पीपल हु हैव स्पेशल नीड्स, लाइक आई सेड, ओल्ड पीपल, एस्ट्रोनॉट्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और दूसरे काफी स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी डाइट को अगर हमको प्लान करना है तो वो अप्लाइड न्यूट्रिशन है. बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आफ्टर क्लियरिंग नीट एक्सेप्ट एम्स. ओके, that depends on where you are located. Okay, if you go for if you're located in Hyderabad, Telangana, then there is Gandhi Medical College, there's Osmania Medical College. These are the government ones. दो तीन है. उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट इज नाउ ओपनिंग many हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज वो लोग खोल रहे हैं. तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए ऑप्शन ओपन है एम्स के अलावा. और अगर आप तेलंगाना में नहीं है तो देन यू विल हैव टू लोकेट आपके स्टेट के हिसाब से. कार्डियोलॉजिस्ट इज गुड, ऑफ कोर्स इट इज रियली गुड. लाइक आई सेड, you can everybody's having heart diseases these days. तो cardiologist बनने के लिए you have to do MBBS first. Okay, there is no BSc cardiology, so MBBS करें. MBBS करने के बाद MD cardiology, and of course it's a very high paying, very lucrative career. But अभी recently एक surgeon के बारे में सुनने में आया कि he was a very busy cardiologist and he had a heart attack. तो सोचिए हम किस तरह के डॉक्टर्स बेचारा वो 8-10 कार्डियोलॉजी पेशेंट्स को ट्रीट करता था दिन में, और वो खुद ही उसको ही हार्ट अटैक आ गया. तो डोंट बी अ कार्डियोलॉजिस्ट लाइक दैट. Be a cardiologist who actually cares about your heart yourself, and then you have to care about your patient's heart. Science studies के do culinary sciences. I'm not sure, honey, but you have to check. You'll have to check उस particular culinary school का जो है क्या है entrance level. Some people accept, I think arts वाले को भी वो लोग accept करते, commerce वालों को भी करते. Some of them need biology, BPC in their culinary sciences admission. Short term courses after masters in zoology. मास्टर्स करने के बाद आप क्या शॉर्ट टर्म करना चाह रहे, लाइक आर यू लुकिंग टू वर्क और एज ए लेक्चरर, और बिकॉज इफ यू डन मास्टर्स देन you can get a job as a zoologist in different zoology experts. वो लोग जो zoology experts को hire करते हैं, you can get a job there. और if you want to change your career, zoology में आपको नहीं करना है, तो फिर आप ऐसे short course करें जिसमें से आप ऐसी चीजें कर सकते हैं. For example, you can do a short data science or coding, and then you can start machine learning, data science, coding. ये सब के short courses आजकल बहुत आ चुके हैं. So you just pay for a 6 months coding course and then you start coding. There is a limit in PhD, minimum 18 and maximum 5 to 7 years. Okay, thank you. वो तो of course 5 to 7 years. But I did not mean कि there is no limit. मगर ऐसा नहीं है कि 2 साल में ही करना है. बाकी डिग्रीज का कैसा रहता, BSc 3 साल में ही करना है, मास्टर्स 2 साल में ही करना है, वैसा नहीं रहता PhD में. That's what I meant to say. Okay, is doing MS good? MS is Masters in Sciences. Now it depends आप कौन सा Masters in Science कर रहे हैं, और करने के बाद आपका करियर गोल क्या है. Of course हर डिग्री गुड ही है. Okay, whatever degree you do is good. अगर आपका गोल है तो डिग्री अच्छी है. अगर आपका गोल कुछ और है और आप डिग्री कुछ और कर रहे हैं, if there is a mismatch, then of course I can say that it's not good to do. Can we do BVSC after BSc? I think yes, you can, but here the discussion was about after 12th. So after 12th, if you can go for BVSc directly, that is good.
मास्टर्स इन वेटरनरी साइंसेस में बीएससी वालों को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, आप एक बार चेक कर लेना, या फिर दे हैव सम दे हैव सम ब्रिज कोर्स जिसमें आप एनिमल एनाटॉमी का थोड़ा सा पढ़ के फिर उसके बाद आप मास्टर्स अगर ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो यू कैन लुक इनटू दैट। लॉन्ग टर्म के साथ कोई और कोर्स कर सकते हैं क्या बाजी? मैं जब ये लेक्चर के लिए रिसर्च करी थी तो सब जो करियर गाइडेंस वाले थे वो लोग बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म करते वक्त बीएससी में एडमिशन ले लेना, क्योंकि बीएससी में हम जो भी चीजें पढ़ते वो सब लॉन्ग टर्म में हमको हेल्प करते। ठीक है, बीएससी में हमको क्या रहता, वही रहता ना, बॉटनी, zoology, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वही 4 सब्जेक्ट्स रहते और वही 3 सब्जेक्ट्स रहते और वही उसका ही हमको लॉन्ग टर्म देना है। ठीक है, तो बीएससी ज्वाइन कर लेना और बीएससी का भी एग्जाम देना और लॉन्ग टर्म भी देना। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ कि अगर आप बीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे और एमबीबीएस में 1-2 सीट खाली हो गए, जैसा कि कोई शिफ्ट हो गए स्टेट से, या फिर कोई गिव अप कर दिए, मैं नहीं कर सकती हूँ एमबीबीएस बोल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में छोड़ दिए, तो वो लोग क्या करते, बीएससी के टॉपर्स को एमबीबीएस में सीट दे देते। तो ये भी एक ऑप्शन है। What is the scope in bee pharmacy? Nowadays it's a very saturated market. मतलब like there are so many pharmacies and so many pharmacists, but of course scope तो है, scope will always be there. ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल्स का स्कोप कहीं नहीं जाएगा। इंडिया जैसी कंट्री में करोड़ों के पॉपुलेशन में स्कोप विल ऑलवेज बी देयर फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। ओके, दवाइयां बना के दवाइयां लिख के देने वालों को कभी कभी इंडिया में कमी नहीं होगी, but it is very saturated in cities, I can tell you that. If you go a little beyond Hyderabad, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में, थोड़ा गांव में अगर आप गए और वहां पे सेटअप करें तो ऑफ कोर्स यू विल बी वेरी सक्सेसिव एंड वेरी लुक्रेटिव फार्मासिस्ट। ओके, फोरेंसिक साइंस कॉलेज इन तेलंगाना, forensic science is available in University of Hyderabad, check it out. Okay, BSc nutrition, I did talk about BSc nutrition in my lecture like a lot. Okay, best pharmacy colleges in Warangal, I do not know, honey. Warangal you will have to search. I can help you with Hyderabad, and that's it. You will have to search for pharmacy colleges in Warangal, but Hyderabad mein I can tell you, we have Deccan, we have बहुत सारे colleges है और भी, Malla Reddy, Pulla Reddy, something, so many colleges of pharmacy. Okay, can I get the recording of the career? You will have to ask the organizers. Streams after BPT, like I said, after Bachelor of Physiotherapy आप specialize कर सकते हैं। तेलंगाना में 3 specializations available है, orthopedics, neurology, cardiology, sports। ये 4 अवेलेबल है तेलंगाना में, लेकिन बीपीटी के बाद और भी ऑप्शंस, अगर आप गायनेकोलॉजी में मास्टर्स अवेलेबल है, चाइल्ड डेवलपमेंट में मास्टर्स, पीडियाट्रिक्स में मास्टर्स अवेलेबल है, आई थिंक 7 और 8, बाकी पूरे इंडिया में 7 और 8 मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी के कोर्सेज अवेलेबल है। यू विल हैव टू फर्दर रिसर्च, लेकिन तेलंगाना में 4 है, कार्डियो, न्यूरो, ऑर्थो और स्पोर्ट्स। ओके, बेस्ट फार्मेसी कॉलेजेस इन हैदराबाद विद गुड प्लेसमेंट्स, there are so many, you just type B Farm in Hyderabad, there are so many. What can you do after BSc? मैथ्स इकोनॉमिक्स स्टैट्स का लेक्चर इससे पहले वाला था कशात सेट का, आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ्स इकोनॉमिक्स स्टैट्स, बट लाइक आई सेड, हर बीएससी करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप बीएससी के बाद या तो बीएड करके टीचर बन जाए, या फिर एमएससी करके पीएचडी करके डॉक्टर बने और साइंस की फील्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करे, या फिर बीएससी करके आप यूपीएससी का एग्जाम दें, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो तेलंगाना गवर्नमेंट, सॉरी इंडिया गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की आपको जॉब मिल सकती है। डू यू बिकम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आफ्टर 3 years? I think they take some BSc nutrition people for internship and then they give jobs to them. But if you do a master's in nutrition, in clinical nutrition, then you can directly become a clinical nutritionist. Can I get free seat in BDS after writing NEET? Yeah? We can take one more question. Okay, last question. Yes, of course, honey. If you get a good rank in NEET, you will get a free seat in BDS. What about gynecology? What should I tell you about gynecology? After doing MBBS, you have to do masters in gynecology, and then you can practice. You can bring babies into the world. Okay, last question. We are done. Sorry, जिसके भी questions में नहीं answer कर सकी. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. The leftover questions can be asked on the number which will be sent on the Zoom chat at the end of our program through WhatsApp. Yes, please.
Jazakallah khair, Sister Sidra, for your expertise. I believe your insights and experience will greatly enrich and benefit individuals in their journeys. प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आप सबको GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्तसर सा तारुफ देती चलूं. Girls Islamic Organization is all around India, which gives a platform for the girl students and young women to prepare them for leading their individual and collective lives in accordance with the Quran and Sunnah. We aim to promote and cultivate true knowledge and understanding of Islam and focus on the all-round development of the individuals. JIO का मकसद लड़कियों और तालिबात में अल्लाह ताला की रज़ा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा और आखिरत की फ़िक्र को परवान चढ़ाना है. Our various activities include weekly programs, monthly tarbiyat programs, summer camps, various campaigns, sports tournaments, and many others. Jazakallah everyone for joining today. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help you to make the right decision for your career, which is good for your religion and subsistence and your hereafter. May Allah make our Iman beloved to us and beautify it in our hearts. I hope our program will help you to make informed decisions about your future and discover the exciting possibilities that lie ahead. For latest notifications and update about our enlightening sessions, stay tuned and stay connected with GIO Telangana Insta and Twitter handles. Inshallah, for the leftover questions, and if you are interested to become a part of GIO, you can contact us through WhatsApp on the number which will be sent in chat soon. You can attend the GIO programs at your nearest locations. Join us, nurture yourself, and enlighten the world around. I hope everyone has received the contact number. You can contact us through WhatsApp on this number. The number is 891-938-7886. I repeat, 891-938-7886. You can ask your queries here. Jazakallah khair, everyone.